per as per the Bhakti Vriksha seminar thing, because obviously you all have given one point common, as in, it gives us the great spiritual strength. Because this world is full of problems. I mean, it's full of misery actually. You don't want any misery, of course, but it just comes. And things are very difficult and we cannot avoid very easily as well. So we have to get some spiritual strength actually to overcome those materialistic issues and the problems and the miseries of life. The chanting 16 rounds is like a small, a Kaliyu kind of tapasya actually. It's not like a big tapasya or something, we are going out and, doing at a stretch for a long time. But it's just like a couple of hours in a day. And that too, sometimes not even at a stretch, you can make it divided. But you really get a lot of spiritual strength by chanting 16 rounds because your consciousness is changed and you get the real blessings and empowerment from Krishna. So that is what is required in our life. People are doing something to get some other strength, but they are not getting any strength because they are knocking the wrong door. They won't get any strength by doing something else apart from the chanting of the holy name. So if we really want to get some spiritual strength, we have to chant 16 rounds minimum, not maximum, but minimum 16 rounds. So at least we touch that point of spiritual realm, the spiritual strength. Once you chant 16 rounds, then you are fully in a protected zone. People cannot agitate you. People cannot, affect your consciousness after that. We have to really keep our consciousness intact in this yuga very specially, because if the consciousness is diluted, if the consciousness has become negative, the consequence of those things are also very negative and we fall into a material trap. So we have to be very cautious and chant 16 rounds bare minimum every single day so that we make a justification to our life as a spiritual life and we get a spiritual strength as well. Of course, when you do these things in the morning, when you chant 16 rounds in the morning, whatever time, 5 to 7 or 6 to 8, it keeps our mind in Krishna consciousness throughout the day. Because the first thing of the day is you have done the chanting of the holy name. You started your day with the chanting of the holy name. Now the whole day revolves around Krishna. If you're doing something, the holy name will come out automatically from your mouth. You always think of Krishna. You always do something for Krishna's pleasure. So the whole day is Krishna conscious. Throughout the day, if Krishna is with you, nobody can actually harm you. Mare Krishna rakhe ke, or rakhe Krishna mare ke. If Krishna is there to protect you, nobody can harm you. Nobody can change your consciousness at all, because you have started your day with such a powerful tool, with the great of, the holy name. So that's why it is highly recommended that we should chant 16 rounds in the early hours of the day, so that our whole day becomes spiritualized. I mean, if nothing is happening, then at least, to finish 16 is the first priority. But if possible, we should try to do that in the morning hours rather than in the later hours. Then this is the minimum recommended by Srila Prabhupada in order to be a human being. Otherwise, our consciousness is animalistic. Prabhupada said, if you want to become a human being, you must chant 16 rounds at least every single day and follow the 4 regulative principles throughout your life. Then you are a human being. Then you come in the category of Manushya, the human being. Otherwise, you are an animal. You are doing everything like an animal only. They also do some work. They also get something. They also feed themselves. They also take care of the family. They also do everything. But what is the differentiation between the human and the animal is this 16 round of chanting Hare Krishna Mahamantra. Ahara nidra bhayamaithunam cha samanyametat pashubhir naranam dharmo hi tesham adhiko vishesho dharmena hina pashubhi samana. There are activities which the animals do and even the humans also do. What is the difference?
Somebody may be a CEO, somebody may be a great personality, but at the end of the day, they are not chanting Hare Krishna, the 16 rounds. Then they are just same like animals. They might have achieved more, but if they fall in the same category actually. They are the greatest animal actually, but still in the category of the animal. They have not come out of the category of the animal because they have not chanted the Hare Krishna Mahamantra. Shrama eva hi kevalam. I was in the, in Soho, we were discussing few things in the morning with the Soho temple pujari. And he was saying people do a lot of things actually. They do crazy things actually. They go academically, become like PhD, then, do a lot of research and they write books, they read books, nonsense books actually, which doesn't make any sense in their life. Then what is the point actually? They are not adding any spiritual value in their life. It becomes shrama eva hi kevalam. It becomes just a labor intensive activity, nothing else. It is like a donkey. Donkey does a hard work actually. I mean, whole day he works so hard, but what does he get out of it? He still remains a donkey only. He doesn't elevate his consciousness by doing working hard. So our especially, I mean, specifically, very clearly, our aim is not to just work hard. Our aim is to change our consciousness from the animalistic to at least the human. Then only we get a justification to our this life. Otherwise, what are we doing here? We're just doing a time pass. We might have achieved a lot in the materialistic point of view, but within a second, the whole thing will collapse. It can collapse because we ourselves as a body can also collapse. So what is, any other thing apart from the body that can also collapse? That's why ahar nidra bhay maitunam cha samanyametat pashubhir naranam. Ahar nidra bhay maitunam. Ahar is to, is to eat or to work to get something to eat. So that is ahar. Even the animals do that, and the humans also do that. Humans work out, they go out, put a coat, pen, tie, work, get a salary, feed the family. Animals also do the same. We had a pigeon in our balcony, I mean, maybe a year ago or something. The mother pigeon was going out in search of food and bringing something for the baby pigeons. Similar thing actually. I mean, there is no difference. I saw it myself from my own eyes. That same activity is happening between the animals and the humans. What is the difference actually? Art, what is the difference? The difference is dharmo hi tesham adhiko vishesho dharmena hina pashubhi samana. They cannot elevate their consciousness because they are limited. They are limited, they're restricted in their consciousness. They cannot go beyond a certain point. But humans can. But we have to become human first to understand all this. So then the nidra, ahar, we eat, they eat. Nidra, we sleep, they sleep. Bhai, we also defend ourselves. They also defend themselves and their family as well. Maithunam cha, procreation. They also have kids and we also have kids. What is the difference? Dharme hitesham adhiko vishesho dharmena hina pashubhi samana. If you are not chanting Hare Krishna, you may be the greatest of the personality of the whole world. It is a waste of time, actually. So one has to understand, we are not saying that you should not do all those things, but not at the sacrifice of chanting Hare Krishna, actually. That is the point here. Not sacrificing chanting Hare Krishna and doing everything. And in the end, you realize that whatever we were doing was just a time pass and actual activity was Hare Krishna and we didn't do it. So why to actually regret in the end? Try to make a balance. Try to keep those things intact together like a railway track. It's a great example of a railway track. Why there are two tracks? The train cannot stand on one track. It needs two tracks simultaneously at the same time. Similarly, in our life also, material and spiritual things go hand in hand. We should not sacrifice one on another. We are not asking you to sacrifice your materialistic life also, but at the same time, it is highly recommended we should not sacrifice the spiritual as well.
Otherwise, our train will imbalance and we will fall down. There will be an accident. We don't want that accident to happen. So chanting 16 round of Hare Krishna Mahamantra is a bare minimum thing. After that, you can do whatever you like to do throughout the day. That day is all the duties and responsibilities you have to do, you can carry on. But take that 2 hours in the morning to chant Hare Krishna. Nobody is stopping you to do that. Nobody can stop you to do that. You can do it. The only thing requires is a heartfelt conviction from inside. Yes, I want to do it and I will do it. You can do it. But what we normally do is we keep on making excuses for ourselves. Whose loss is this actually? We say, I don't have time. For what I have time? We have a lot of time for so many things actually. But we don't have time for Krishna means we don't have time for ourselves. It is our loss. If you chant, it is your benefit. If you don't chant, it's your loss. It is not anybody else's loss. It is not anybody else's profit also. Whoever chants, they will get the benefit. Now, am I intelligent enough to take this process? This is a question I should ask to myself. It gives us more taste in chanting. When you chant Hare Krishna, the 16 rounds, then you actually develop a taste. That ruchi will come. Ruchi you can't develop in 1 round or 4 rounds or 8 rounds. You're just filling the gap, fill in the blanks, leave it, put it aside. It's tick mark exercise done. But when you start chanting 16 rounds means you actually want to do it. You love to do it. You want to chant, you get to chant and you love to chant. And when you love to chant, when you look forward for that activity, then the taste is going to come. You relish it. You relish that chanting. It is not like a forceful chanting. Nobody is asking you to wake up and chant, but you decide yourself. You wake up early and you chant. It is your own thing actually. One thing is very clear in your life, in all of our life, until and unless we make anything our own thing, it is not going to make any impact in our life at all. We have to make our own thing. It is not anybody else's thing. It is my own thing. It is my own responsibility and I'm going to do it. I don't need anybody's instruction or force anything. It's really coming from my heart. I want to do it. This is like a spiritual activity, of course. Now, even you talk about the materialistic activities also, we take it actually. We take a lot of ambitious projects on our own. We take as an own thing and we do that and it becomes successful. If we think it's not mine, it is somebody else, you won't get any benefit out of it actually. Until and unless you make your own thing. You have to take up that responsibility. Yes, I will do it because it's my own. ये मेरा है, मुझे करना। नहीं तो materialistic कामों में भी अगर हम सोचेंगे कि किसी और का है, मुझे क्या पड़ी है इसकी, I'm not going to do it. The result is also the same. So you won't get anything out of it anyway because you haven't even taken it to yourselves. So that's why it's a very important subject for us to understand. Are we taking this process as our own? Then only the taste will come. Otherwise, the taste will not come. We will keep on chanting for n number of years and we'll keep all the time we'll keep the same consciousness. There's no change of heart. Because we have not taken it as our own thing actually. Because somebody, Toral Mataji or Varsha Mataji or somebody asked me to chant, so I'm just chanting. I don't want to chant from my own side actually. Then it is not going to work. One day, whoever has asked you to chant, they may not be there with you. But the chanting will remain. You can carry on actually. It gives rapid advancement and the desire to render devotional service. That is Dina Mataji's point actually. So it gives a rapid advancement, because sometimes, to render devotional service, you have to have some round of chanting actually, you have to do
16 rounds of chanting. So because of that, devotees start chanting 16 rounds and they get a taste in the devotional service. They want to do more service. They want to chant more. They get more service. So the chanting and the service goes hand in hand. The more you chant, the more you get service. The more you do service, the more you like to chant. It is compensating each other. More chanting, more service. More service, more chanting. Both are very, very important for every devotee's life, actually. We cannot sacrifice both the things because we chant to get a service. And when we get a service, we really do that, then we realize what Krishna consciousness is. And our rapid advancement is guaranteed. Your consciousness is changed. You are changed. It's a different person after that. It gives us great protection in our spiritual and material lives. Nobody can shake your faith after that, Nobody. Even if Brahmaji also comes in your life and says that, can you please leave this process? You will not leave it. Because your faith is there. You are well protected in your life, material speaking. Krishna actually takes care of those devotees who are completely dedicated to him. Ye yatha mam prapadyante tams tathaiva bhajamya. According to the level of surrender, Krishna reciprocates. हमारा surrender कैसा है? Are we, bold enough to surrender to Krishna? Are we actually ready to surrender to Krishna? Are we ready to sacrifice our laziness or, the morning hours if somebody can't wake up? They say to Krishna, Krishna, I can't wake up, but tomorrow I'm going to wake up and I will chant. This is my sacrifice for your pleasure, because I know this is the ultimate thing and it will give me the protection. That person wakes up. The day is there actually. Everybody does the same thing in the day, but they still wake up early because they know the importance of that early morning chanting. So it gives us a great protection in our spiritual and material lives because Krishna is there to protect you throughout the day, throughout your life, in both ways, material also and spiritual as well. And we can get a deeper understanding of the Krishna conscious philosophy. We will understand who Krishna is. Bhaktya mam abhijanati yavan yaschasmitatvatah. If you really want to know Krishna, the only method to know Krishna is by chanting of the holy name. There's no other way. Bhaktya mam abhijanati. If you really want to know me, you know me by bhakti, the chanting, the service. Otherwise, you cannot know Krishna. Bhagavad Gita will remain a mystery only, and you will interpret it in a different way. But once we chant, once we start doing service, we have a clear understanding that what is Krishna conscious philosophy actually? What is Krishna saying in Bhagavad Gita? What it means for me? What I should do as a devotee? Then the life is different actually. So, coming back to all of you, I hope it makes sense to chant 16 rounds. Anyone has any issue for chanting 16 rounds, they can bring it here. I want to add something to other devotees as well. This chanting, the chanting is so powerful that when you are going through the difficult times, that's when you will realize that keeps you neutral. आपको धैर्य सिखाता है ये चांटिंग, क्योंकि आपके मन में ये विश्वास होता है कि जो चांटिंग मेरे पास है वो भगवान की शक्ति है. He will make it better. आपके मन में से ही वो आवाज आएगी कि I'm chanting every day to God, I'm connected to the परमात्मा and He will make everything better. और जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और अच्छे के लिए ही भगवान करेंगे. विश्वास अगर आपको चाहिए तो चांटिंग ही है. इसमें वो सब ये शब्द में ही इतना पावर है कि ऑटोमेटिकली आपको अंदर से चेंज कर देता है. आपको कनेक्ट गॉड से कब कर देगा पता ही नहीं चलता. वो कब पता चलता है जब आप रियली क्राइसिस में होते हो, जब डिफिकल्ट टाइम्स में आओगे
तब आपको वो न्यूट्रल रखेगा। दूसरे जो चांट नहीं करते वो जल्दी से घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि अरे मेरा क्या होगा, हाय इस परिस्थिति में से कैसे निकलूं। लेकिन हमारा कनेक्शन भगवान के साथ चांटिंग थ्रू ऐसे ही हो सकता है जब हम 16 राउंड्स की हमें आदत हो। सवेरे मैं जब उठ नहीं पाती हूँ तो ऐसा मन में होता है कि कुछ गाड़ी छूट गई है, आज कुछ है जो छूट गया है। सो इट हैज टू बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ इन द मॉर्निंग। चलो भगवत गीता में भक्ति भिक्षा में आए, सुना और फिर अपने मटेरियल लाइफ में फिर से बिजी हो गए, फिर नेक्स्ट फ्राइडे मिलेंगे, ऐसे भक्ति नहीं आती है। एवरी डे की जब प्रैक्टिस होगी, लाइफ टाइम की जब प्रैक्टिस होगी, तब आपके दुख के समय में गॉड आपको खुद एहसास होगा कि गॉड इज विथ यू। सो इज वेरी इंपॉर्टेंट that whatever you are doing, chanting is has to be the part of your life every morning. ये प्रभु जी, and it gives a calmness as well. अंदर से ठंडक आपको शांति देती है, क्योंकि जब उचाट रहता है, जब हमारे पास भगवान का नाम साथ में नहीं होता तो हम अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया आपके साथ होगी, लेकिन अगर भगवान आपके साथ नहीं होगे तो आपका भय कोई दूर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके साथ भगवान है तो आपको कोई डरा नहीं सकता, कोई भी सिचुएशन आपको डरा नहीं सकती। सो वेरी इंपॉर्टेंट, चांटिंग इज इन अ वे भगवान का नाम नहीं है, वो भगवान खुद आपके साथ है। सो प्लीज बी सीरियस एंड चांट इन द मॉर्निंग। कुछ लोग इस ग्रुप में से नहीं आते हैं मॉर्निंग में, ओनली कुछ ही नेम्स दिखाई देते हैं, लेकिन आई होप एंड आई प्रे कि आप लोग करते होंगे 16 राउंड्स इन द मॉर्निंग, कि आपकी पूरी कोशिश रहती होगी कि आप चांटिंग करते हो इन द मॉर्निंग। इवन दो यू डोंट कम ऑन टू द सेशन और इन द लिंक, मेक श्योर दैट आप चांट करो एवरीडे। ओके, थैंक यू प्रभु जी। Thank you so much, Mataji. So, how many devotees are chanting 16 rounds in our group? Or if anyone is not chanting, is there any difficulty which we can help with? You all must be chanting 16 by now. I don't know. What's the fireworks? Amit Prabhu has something to ask. No, bro. No. Fireflies. What's that? Fireflies. You want to say something, Prabhuji? How many rounds? No, I have been a bit not consistent. Like as I said, just maybe on an average 6 rounds. That is still because for whatever reason I know, but that is I'm kind of maintain that around that average six rounds. It's all whenever the time comes, it will happen. I know you have also tried to motivate a lot of times. We have spoken individually also, and you have, I think last we spoke when Janmashtami was there. So, but I think I have not progressed much again. So, No problem. Ram Navami is here. Ram Navami is here, yes. You see, Krishna empowers us. If we have that desire, I mean, it's not, sometimes people think that, you know, we are forcefully asking people to chant like that. It's nothing like that actually. मतलब ये एक मतलब हम जब किसी को कहते हैं ना, तो ये एक अंदर से हृदय का भाव है हमारा आपके प्रति। मतलब हमें ऐसा लगता है कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मतलब नुकसान आपका हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम आपके पीछे पड़ के और आपसे करवाना ही चाहते हैं, एंड दिस इज द ओनली थिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमारे जो लोग अपने होते हैं ना, जब वो मतलब जो चीज़ करनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, तो फिर अंदर से ऐसा लगता है कि हम उनकी क्या मदद करें, क्या हम उनके लिए करें, जिससे उनको लाभ मिले, जिससे उनका फ़ायदा हो। अ, मतलब वी कैन डू एनीथिंग फॉर दैट एक्चुअली, यू नो, टू मेक इट हैपन। वी रियली वांट टू डू इट। आई मीन, इट इज़ नॉट लाइक अ मटेरियलिस्टिक एक्सरसाइज़ या ऐसा कोई नेम सेक एक्टिविटी भी नहीं है। ये एक इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एक्चुअली। अ, मतलब ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए कि मतलब उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। You know, when you see lot of great people actually, I mean, they are super busy and they have a lot of different projects going on, but they make time to chant 16 rounds. You know, Anil Agrawal,
He's, I think, he's a chairman of Vedanta Group. If you know him, he's one of the probably millionaires here. I mean, he's one of the top rich people in London. He chants 16 rounds every day. He comes to Soho Guru Puja every single day. He's a very rich man. So if he can do, then if you see His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, sometimes people say that, I'm not well, so I can't chant. He's actually not really well. I mean, when you talk about physical things, he has all the issues in his health. He chants 32 rounds every single day. 32 rounds. We have excuse to not to chant 16, but these people have time to chant many, many rounds. So the point here is, it is nobody or nothing actually can stop us to chant 16 rounds. Even though you may be busy for like 16 hours you are working, still you have time to chant 16 rounds. It should become a part of life that we should not have a separate thinking कि वो करना है या नहीं करना है, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं. I mean, we just do it. हम डेली खाना खाते हैं, डेली काम करते हैं, डेली नहाते हैं. So it is one of those daily activities like chanting 16 rounds. It is not a separate endeavor. It is just a part of your life. If it has not become a part of your life, then there is something to think about. फिर कुछ सोचने वाली बात कि अब तक हमारे जीवन का हिस्सा क्यों नहीं बना है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी बात यही है. बाकी सब चीजें इसके सामने छोटी हैं. सब चीजें, everyone, everything is smaller compared to the chanting. We have not set our priorities correctly, it seems. I'm not saying you have to sacrifice any other thing. That is not a point. But how we can manage it, that is the point. With the interest, with your actual conviction from inside, अगर आप चाहते हैं ना, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती करने से. कृष्णा is with you. भले ही दुर्योधन के पास में अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन भगवान तो अर्जुन के साथ ही थे ना. जीत किसकी हुई? अर्जुन की. भले ही बहुत सारी विकराल परिस्थिति जीवन में चल रही है, लेकिन आप जैसे ही 16 माला करना चालू करेंगे, भगवान आपके साथ हैं. आप अर्जुन हैं, भगवान आपके साथ हैं, जीत आपकी पक्की है. जीवन में कभी भी कोई चीज से आप पीछे नहीं हटेंगे. फिर भले ही आप मटेरियलिस्टिक लाइफ की भी बात करें, तो उसमें भी सक्सेस मिलेगी आपको. अगर कोई सोचता है कि भाई मैं 16 माला करना चालू कर दूंगा तो मेरे बहुत सारे काम अटक जाएंगे या मुझे समय नहीं मिलेगा, वैसा भी नहीं है. हम सभी करते हैं, हम सभी काम करते हैं, सभी की फैमिली है, सभी के अपने अपने ड्यूटीज हैं, सब अपना अपना करते हैं. बहुत बिजी भी हैं, बहुत सारी चीजें चलती हैं. कभी बहुत बिजी टाइम आता है जब 20-20 मतलब 16-16 घंटे कंटिन्यूअस काम चलता है. फिर भी चैंटिंग तो चैंटिंग है, माला तो माला है. अगर 16 घंटे काम करने के बाद में हम खा रहे हैं और खाने के लिए खाना बना रहे हैं, तो फिर भगवान का नाम हम क्यों नहीं ले रहे? सो इट इज अप टू अस. कितने ही शास्त्रों के उदाहरण मैं आपको दे दूं, कितने ही दूसरे लोगों के उदाहरण आपको मैं दे दूं, कितना ही आपको मैं दूसरे प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपको बता दूं, लेकिन जब तक आपके मन में नहीं आएगा ना कि मुझे करना है, तब तक कुछ नहीं होगा. तब तक नहीं होगा, ये गारंटी है. आपके मन में आना चाहिए कि मुझे करना है. फेथ अंदर से आता है, फेथ बाहर से नहीं आता है. कोई आपको फेथफुल बाहर से नहीं बना सकता है, आप अपने आप को बना सकते हो खाली, दैट्स ऑल. इसलिए तो इसको रीअवेकनिंग बोलते हैं. इस होल प्रोसेस को रीअवेकनिंग बोलते हैं. मतलब कि इट इज रिवाइविंग योर कृष्ण कॉन्शियसनेस. आप पहले से हो, आपको हम सिर्फ याद दिला रहे हैं. आप कर सकते हो. Anyone and everyone can do it. We are just reminding people. We are not giving any knowledge here. हम यहाँ पर कोई ज्ञान देने नहीं आए.
सब में सब ज्ञान है ऑलरेडी, किसी में कोई ज्ञान की कमी नहीं। हम सिर्फ याद दिला रहे हैं कि वो ज्ञान आप में है, आप उसका यूज करें। और जब आप यूज करने लगते हैं तो आपके अपने अनुभव होते हैं। यू हैव योर ओन रियलाइजेशन, यू हैव योर ओन ग्रोथ, एंड दैट्स हाउ द लाइफ वर्क्स एक्चुअली। Everyone knows everything actually. We are Satchit and Anand, we are Satchidanand, we are eternal, we are full of knowledge and we are full of bliss. We are part and parcel of Krishna. कोई नई बात नहीं है, आपको मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ आज। All I am trying to say is the same thing which you already know. कोई नया ज्ञान में नहीं लेके आया हूँ आज आपके सामने। It is the same thing again and again. सिर्फ इतना ही आग्रह है कि आप अपने मन से सोचिए इसको, आप अपने हृदय से सोचिए, आप अपने अंदर के भावों से सोचिए कि मुझे ये करना है। फिर आप करके देखिए, ज्ञान विज्ञान बन जाएगा। फिर becomes a realized knowledge. It does not remain as a knowledge only. तो इसलिए कोई कारण नहीं है हमारे पास नहीं करने का। एक्चुअली हमारे पास में सारे कारण है करने के, नहीं करने का तो कोई कारण ही नहीं। भगवान की कृपा से हमारे परिवार वाले इतने फेवरेबल हैं कि कोई वो भी नहीं रोकते हैं हमें। कोई ऐसा भी नहीं कहता कि तुमने अगर चैंटिंग की तो या तो भगवान या मैं, दोनों में से एक को चूज करना है। ऐसा भी नहीं। कई कई परिवारों में ऐसा होता है, कई कई परिवारों में ऐसा होता है कि तुम माला नहीं, इस घर में तुम्हें अगर रहना है तो माला नहीं कर सकते। बहुत सारे फैमिलीज मुझे ऐसे भी मिलते हैं। पिछले 12-13 सालों के एक्सपीरियंस में मुझे बहुत सारे लोग मिले और उनमें काफी सारे ऐसे भी थे। हस्बैंड वाइफ को चैंटिंग नहीं करने देता और वाइफ हस्बैंड को चैंटिंग नहीं करने देती, ऐसे भी। फिर भी वो करते फिर भी वो करते, सामने नहीं करते। मतलब हृदय की बात है। अगर करना है तो करना, फिर एक ना एक दिन अदर पर्सन ऑल्सो चेंजेस। मतलब उस परिस्थिति में भी अगर कोई कर रहा है तो मतलब हम तो उस परिस्थिति में भी नहीं है। मतलब हमारे परिवार वालों ने हमें रोका नहीं है चैंटिंग करने से। किसी ने कहा नहीं है कि तुम ऐसे माला लेके बैठ जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है, चलेगा नहीं, ऐसा बंद करो ये तुम्हारी दुकान। ऐसा भी नहीं कहा है किसी ने। सब बड़े अच्छे मिले भगवान की कृपा से। सो व्हाई कांट वी जस्ट डू इट? रोका किसने है हमें? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। किसने रोका है हमें? कौन रोक रहा है हमें ये सब करने से? कौन रोक रहा है हमें भगवान का नाम लेने से? कौन है वो? समथिंग टू थिंक, समथिंग टू इंट्रोस्पेक्ट। अंदर से हमें एक सोचने की बात है। यू हैव टू थिंक इनसाइड। आत्म मंथन की जरूरत है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। और जब आप करने लगेंगे, अगर कोई है ही नहीं, अगर मन का ही वहम है, अगर मन ही बोलता है कि नहीं करना है, तो मन को साइड में रखते हैं। मन को हम साइड में रखते हैं। Just do it. I was reading a book called Vaishnava Key. It's an amazing book actually. I was reading कि कैसे कैसे लोग होते हैं, किस प्रकार के वैष्णव हैं, मतलब जो कहते हैं कि मुझे ये नहीं करना है। मतलब मैं भी वैष्णव हूँ, सारे ही सब वैष्णव हैं, मैं अपने हिसाब का वैष्णव। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की लिखी हुई किताब है। उसका ट्रांसलेशन जब तक महाराज ने किया, उसमें लिखा है कि तुम किस प्रकार के वैष्णव हो तुम। लोगों की निंदा, इधर उधर की बातें करते रहते हो, उसमें बहुत सारा टाइम लगाते हो, भगवान के लिए टाइम कैसे वैष्णव है? आई ओपनिंग बुक एक्चुअली। बोले हम प्रतिष्ठा के लिए, हम नाम, इधर उधर की संपत्तियों, इधर उधर के करने के लिए बहुत सारा समय हम लगाते हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं? प्रतिष्ठा को उन्होंने एक नाम दिया है इसके अंदर। मतलब प्रतिष्ठा, यू नो ना, फेम, मतलब लोग आपकी बड़ी बड़ाई करते हैं, प्रतिष्ठा, आप बड़े प्रतिष्ठित हैं। तो वो क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठा जो है उनको उन्होंने संज्ञा दी है शुकरेर विष्ठा। प्रतिष्ठा को उन्होंने बोला है शुकरेर विष्ठा। किसी को मालूम है शुकरेर विष्ठा क्या होता है?
शुक्र मालूम है? शुक्र फ्राइडे। हाँ शुक्र नहीं, वो शुक्रवार नहीं। शुक्र संस्कृत शुक्र शुक्र माने कि थैंक गॉड। नहीं, वो उर्दू है। आई एम गॉन नाउ, आई डोंट नो। शुक्र मीन्स सुअर, सुअर बेसिकली। सुअर, पिग होता है ना, पिग। आई मीन व्हाट डू यू कॉल पिग? पिग, पिग को पिग ही बोलते हैं ना। तो उसमें क्या बोलते हैं? जड़ेर प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा, जनना की तहा मायारा विभव, कनक कामिनी दिवस यामिनी, हविया की गजा अनित्य से सब। Such an ambition for a cheap reputation can be compared to the stool of a hog. Shukriya Vishtha. Vishtha is the basically, the waste or the stool. So the stool of the pig. So basically the pratishtha is compared to the stool of the pig. Who wants it? Anybody wants it now? I mean, this is such a great book actually. Such a cheap reputation can be compared to the stool of a hog, because such popularity is another extension of the influence of Maya. My dear mind, while making a show of chanting the Hare Krishna Mahamantra in a solitary place, you can simply meditating day and night about enjoying beautiful women and accumulating more wealth. What spiritual value does your solitary chanting have? I mean, what he's trying to say is, don't chant alone, chant with devotees. That's what he's trying to say here. Pratishtha is Shukrer Vishtha. And people have a lot of ambitions, a lot of desires. They keep on doing many, many things because of the mind. We just say, this mind, you are not my friend anymore, because you are taking me to a wrong path, and I don't want to walk on this wrong path, because I have a clarity in my heart, and I'm going to do that what I really need to do. And you are fully convinced about it, and you just take a step further. Nobody can stop you. Even your mind will also help you after that. अब आपको कितने लोगों को ऐसा लगता है कि 16 माला की जा सकती है? मुझे लगता है प्रभु जी, मैं करती नहीं हूँ ऑनेस्टली, बट मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि नहीं हो सकता. बट आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ वे टू डू इट अकॉर्डिंग टू जैसे मेरे लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनके अराउंड. तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा कर लेती हूँ, फिर बाद में थोड़ा और करूंगी. वो नहीं हो पाता, जबकि इट्स वेरी इजी आधे घंटे के 4 स्लॉट निकाल लेना. अगर मैं सुबह, क्योंकि ये जल्दी जाते हैं बच्चों को, तो मैं नहीं, अगर सुबह 2 घंटे बैठ सकती तो भी हो सकता है, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू डू इट. सो आई डोंट नो मैं क्या बोलूं अपने बारे में. मुझे नहीं मालूम कौन सा शुक्रेर विष्टा मैं क्या करूं, यू नो. बट यस, आई टोटली एग्री विद ईच एंड एवरी वर्ड दैट यू से कि ये जो जितना हम चैंटिंग करते हैं उतना ही अंदर से मन शांत रहता है. और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ तोरल माता जी का वर्ड, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द सोल, यू नो, वो रहता है. लेकिन यस, मैं ऑफ लेटली आई एम गेटिंग डिस्टेंट फ्रॉम चैंटिंग, एंड आई नो एंड आई कैन फील इट, दैट ड्राइनेस इन मी, दैट एंजाइटी इन मी, lack of spiritual strength, not for Krishna. कृष्णा तो हमेशा ही है, और उस इतनी नालायक बिहेव करने के बाद भी है. इससे पता चलता है that he is the ultimate father. Understand? वो समझ रहे हैं क्या कर रही हूँ मैं, गलतियां इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन खुद मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को फेस करने के लिए अंदर से कमजोर फील होने लगता है. यू नो दैट tendency to worry, tendency to get डर जाना चीजों से, हालात से एंड ऑल दैट, वो बढ़ रहा है. और यही हालात मुझे करने भी नहीं दे रहे, और ऐसा ना करने से मेरे अंदर की स्ट्रेंथ डिप्लीट हो रही है. तो मैं एक विशियस, तो रोज सॉरी मांगती हूँ, रोज स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह, जो क्लास में नालायक बच्चा होता है ना, तो रोज पूजा करते हुए माफी मांगती हूँ. फिर सोचती हूँ कुछ तरीका और ढूंढूंगी कल, यू नो, कल फिर वही होता है ना, पल में प्रलय हो गई बहुरी करेगा कब. तो वो चीज मेरे साथ है, लेकिन मैं
इस बात को कभी भी डिनाई नहीं करूंगी कि यस, जितना आप चैंटिंग करते हैं उतना कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपकी टेंडेंसी हमेशा रहती है कि आप के अंदर वो डिजायर रहती है कुछ करूँ, कुछ डिवोशनल करूँ, कुछ डिवोशनल करूँ। जितना चैंटिंग कम होती जाती है कहीं ना कहीं से मन वैसा होता जाता है दैट यू थिंक नहीं नहीं बाद में करूंगी, यू नो। ये तो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेफिनेटली। दैट्स ट्रू। एक्चुअली क्या होता है कि प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। अभी जैसे सुबह चैंटिंग नहीं की, अभी मान लो कि आपने मतलब सोचा कि लेट आफ्टरनून या शाम को जब भी टाइम मिलेगा, उस टाइम पे क्या होता है, माया का प्रभाव ऐसा है कि आपके सामने कोई ना कोई काम प्रकट हो जाएगा उस टाइम। तो इसलिए क्या है कि डिवोटीज जनरली क्या करते हैं कि उस मोड को आने से पहले-पहले चैंटिंग खत्म कर देते हैं। मतलब वो मोड आना पक्का है, दैट इज़ गारंटीड। आप अगर घर में हैं, तो आपको कुछ और नहीं भी काम है ना, मान लो कि कुछ आज नहीं रहा है, तो भी आपके सामने एक ऐसी चीज़ दिखाई देगी, अरे चलो ये सफाई कर देते हैं। चलो हम्म। ये जो चीज़ है ना वहाँ से इसको थोड़ा इसके मूव बाद कर, हाँ। चलो ये थोड़ी सब्ज़ी और ये थोड़ा काट लेते हैं, चलो अभी यहाँ से कुछ ये ले आते हैं घर में या लिया नहीं है, वॉशिंग पाउडर काफ़ी दिन से लाने नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे अपने आप आ जाती हैं ऐसे, ये डिस्ट्रैक्शन है। ये डिस्ट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि आपने चैंटिंग बाकी रख रखी है। रखी हुई है वो हाँ। आपको नहीं करने देंगे, वो आपको हम्म चैंटिंग नहीं करने देंगे, एंड इट्स अ हम्म। फैक्ट। हम्म। तो इसलिए क्या है कि चैंटिंग वी शुड डू इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो इसलिए मॉर्निंग में क्या है, मॉर्निंग में ये सारे काम आते ही नहीं है। मतलब 5 से 7 जब हम चैंटिंग करते हैं ना, उस समय ये सब दिमाग में ही नहीं आएगा आपके, क्योंकि घर की सफाई 5 से 7 सुबह-सुबह तो करने वाले हो नहीं आप। मतलब वो तो बाद में ही होगा, बाद में। मतलब खैर आपका रूटीन हो सकता है अलग हो, आपके 5 बजे प्रभु जी बाहर जाते हों, तो उठ वो एक जाते बात हैं है। ना तो फिर वो यू नो लंच पैक करो, ब्रेकफास्ट पैक करो, ये करो वो करो, फिर जब तक ये जाते हैं 6 बज जाते हैं। तो मैं सोच रही थी, अभी मैं इनसे बोल रही थी, आई डोंट नो मैं स्पॉन्टेनिटी में बोल तो रही हूँ बट आई थिंक जो भी होता है कृष्ण कृपा से ही होता है कि आज अगर मैं बैठी हो रही हूँ सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से गिल्ट में मरे जा रही हूँ मैं ऑनेस्टली, यू नो। तो जैसे कि मैं सोची थी अगर मैं कोई, जैसे बहुत साल पहले वर्षा माता जी ने बताया था चैंटिंग बडी, हाँ। बिल्कुल, वो तो इम्पोर्टेंट है। कि सुबह कोई, तो मुझे मालूम है तुरल माता जी फट से तैयार हो जाएंगे मेरे मुंह से निकलने की बात थी, क्योंकि जैसे मैं सुबह कोई मुझे पुश करे, मैं कुछ तो भी करके आधा घंटा 1 घंटा, मतलब ये जो आप कह रहे हैं दिन तो स्टार्ट हो उससे, एक हुँ, बार जो ये पेज पलट दिया ना कि करूंगी ही बाद में, उससे तो मैं खुद अंदर से बहुत, मुझे नहीं अच्छा लग रहा ऑनेस्टली। या। नहीं, नहीं, वो सही कह रहे हो आप। क्योंकि जैसे मान लो कि हम कहीं दलदल में फँस गए हैं, तो हम अपने आप से बाहर नहीं निकल पाते। हमें कोई बाहर वाला चाहिए, मतलब कोई बाहर से हमारा हाथ पकड़ के खींच लेगा ना तो हम बाहर एग्जैक्टली आ। मुझे अब फर्स्ट टाइम इतने साल पहले मैंने सुना था चैंटिंग बडी वर्ड वर्षा माता जी से कि उनको किसी ने फिर चैंटिंग बडी करके उनकी हेल्प की, उनको एनकरेज किया 4 बजे। तो मैं सोच रही हूँ शायद मैं ऐसा कुछ करूँ, क्योंकि अब मुझे लग रहा है नीड समबडी टू पुश मी टू दिस साइड बैक अगेन, यू नो। तो जैसे नहीं कर पाऊँ 2 घंटा कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी बजे उठ गई उस दिन, जैसे मान लीजिए 4:30 5, तो हाँ, कुछ तो करूँ, यू नो। सही है। वो हमारे एक वेणुवदन प्रभु हैं, वो मैंने एक दिन 3:30 बजे सुबह चैंटिंग मैंने ऐसे ही करना चालू किया, कॉल चालू किया, तो वो उस समय चैंटिंग कर रहे थे, वो 3:30 बजे। प्रभु 3:40 को होता है, 3:40 50 को हो जाता है वन। मैं हाँ, 4:30 को, कई बार 4:15 को भी मैं भी करती हूँ। 3:30 मतलब जस्ट आई नो इमेजिन। 3:30 को आज मेरा मैं अलार्म तो 4:30 का 3:30 बस, संडे वो का सोच अलार्म के से ही मैं सोच रही हूँ उठती क्या हूँ। होगा। वेणुवदन प्रभु के अलार्म से ही मैं उठती हूँ, वो जैसे मैसेज आता है मैं उठ जाती हूँ तब से बाद में मुझे नींद नहीं आती थी। इट्स सो अमेजिंग। तो मतलब एक्चुअली क्या है, अगर आप वेणुगोपाल प्रभु का रूटीन देखेंगे ना, ही इज सच अ बिजी पर्सन। वो क्या है, टीएफएल का जो सिग्नलिंग का जो डिपार्टमेंट है ना, उसके हेड है वो। मतलब उनका वर्क रूटीन इतना टाइट होता है ना, हाँ उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं है। उस उस काम के बावजूद भी वो सुबह इतना जल्दी उठ के इतने ज्यादा राउंड, और वो तरीके से करते हैं, उनको उनका एक स्पेशल तरीका है करने का। बोलते हैं कि मैं कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करता हूँ, इसलिए मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ। इसलिए मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, मेरे पास समय होता है अच्छे से। भगवान की आरती भी इतने अच्छे से करेंगे, इतने सारे, मतलब 16 राउंड क्या, वो तो बहुत सारे राउंड करते हैं। और फिर उसके बाद में वो नरसिंह कवच डेली करते हैं, फिर सारी आरतियां सब कुछ प्रॉपरली एकदम तरीके से करते हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बोले मैं मटेरियल लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, इसमें कॉम्प्रोमाइज में नहीं करूंगा, ये मेरा पक्का है। भगवान ने हमको ऐसे क्यों नहीं बनाया बताइए ना। मैं अंदर से मन तो ऐसा ही ना, आत्मा जो आप बोल रहे हैं
मन तो करता है हर वक्त यही करते रहो। कई बार मैं जब जल्दी जल्दी मेरी जो फास्ट ट्रैक पूजा कर रही होती हूँ ना, मुझे लगता है प्रहलाद महाराज की जय, नरसिंह देव भगवान की, मुझे लगता है मैं नरसिंह देव का पूरा आरती भी गाऊं, तो नहीं 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 बेल बज जाएगी, अभी जल्दी करो, यू नो। तो ये जो आप कह रहे हैं कि खुल के चैंटिंग करना, जैसे मे बी हर राउंड के बाद कोई एक छोटा सा कुछ गा लेना अपने मन को शांत करने के लिए, रादर देन जस्ट टर्न द बीट फिर शुरू हो जाओ। तो ये मुझे क्यों नहीं दिया भगवान ने ये, अंदर से ऐसी हूँ, लेकिन उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे जिस तरह से तबीयत से करने का मन करता है ना, उस तबीयत से कर नहीं पा रहे। ऑनेस्ट कन्फेशन है। तो आपके बड़ी कौन बनने के लिए तैयार हैं अभी? मार्केट इज ओपन नाउ। मोनिका माता जी का बड़ी कौन बनेगा? कौन बनेगा बड़ी? वो मोनिका माता जी पे डिपेंड है, सब लोग रेडी है अदरवाइज। अरे वाह, क्या बात है! ये देखिए देखिए, थैंक यू परिवार सो ऐसा मच। होता है। कोई तोल माता जी आप उठते जल्दी, कौन उठता? ये तो जल्दी देखो, मोनिका चलो उठो, क्या करो, मैं जानते हैं ऐसे फाल्गुना माता जी का जैसा ही है, जैसे वेणुगोपाल प्रभु जी को थिंक होता है तो हम सब उठ जाते हैं। अच्छा। लेकिन मैं 5 बजे से स्टार्टिंग शुरू होती है, मेरी 5 बजे से होती है, लेकिन आई डू है ना, करके देखते हैं ना, मेरे को शायद उससे हेल्प मिल जाए, क्योंकि ऑफ लेटली क्या हो रहा है, आई एम पुशिंग इट टू लेटर, which is happening, not happening, but which is making me feel very dry, क्योंकि सुबह कर लो, चाहे मैं कहती हूँ 16 नहीं 8 6, एक बार शुरू कर दिया, then whole day you have the urge to pick it up again and do 1 round 2 round, Yes. वो एक अर्ज हो जाती है अगर सुबह ही तन मन से बैठ के कर लिया, मुझे तो हाँ, फिर आप लोग जो भी मुझे बोलो, मुझे हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण Prabhu, माता जी। in Bhagavad Gita class, you said that one exercise that is your, did you listen to your mind or did you listen to your heart or something? If Yeah. Monica Mataji can do that, I think that will happen. Yeah, actually, that's a good one. Did I write and gave it to you, or I just gave it to you? You all said that the you assignments? said that everybody has to do that exercise and Yeah. see where you are, listening to your brain or you're listening to your heart. Yeah. But here I would like to say, how will you analyze this situation wherein you are conscious of what you are doing, you are conscious of what you should be doing, but then there is a meeting happening between your mind and intelligence and your wisdom as well, and somewhere wisdom is Krishna's blessing, so you ask for forgiveness, मुझे थोड़ा सा आज थोड़ा excuse कर दो, और intelligence कहती है ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ठीक रहेगा, plus wisdom, and you tend to do things which makes you push your chanting off. So it's not something that is happening because of things that जैसे मैं कोई टीवी देख रही हूँ या मैं कोई बेकार काम कर रही हूँ, but it is happening. Yeah. नहीं, मैं तो टीवी की तो बात ही नहीं करी मैंने। नहीं, मैं अपना मैंने तो बता रही हूँ आपको, मैं हाँ। खुद अपना बता रही हूँ कि ऐसा लगता है कि फिर होता है भगवान आप देख रहे हैं ना, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे लिए जरूरी, मुझे इस चीज को एस्टेब्लिश करना जरूरी है, मैं ईमानदारी से कर रही हूँ, मुझे मेहनत करनी है, बच्चे भी हैं, बच्चों का एग्जाम भी है, एंडलेस। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप भगवान को साथ में रखेंगे ना, इफ यू चांट हरे कृष्णा, your productivity in your other works will also increase, and Krishna actually helps you there. I mean, it's a very it's an amazing thing actually. ये बड़ी interesting चीज है। मतलब हम सोचते हैं कि हम भगवान के बिना, मतलब भगवान के नाम के बिना ये सारी चीजें करना चाहते हैं। I mean, that's our normal tendency. एक हमारा normal एक रूटीन सा रहता है कि नाम तो मैं बाद में ले लूंगा, पहले मेरे को ये सारे काम करने ईमानदारी से, और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे ये करना है। ये होता है जनरली हमारे साथ। बट इसमें भी अंतर मन में भगवान के बिना बात चलती है। नहीं, वो तो अंदर अंदर बात चलती है, वो तो इट्स अ सुपरफिशियल लेवल। जब तक हम उसको एक्शन में नहीं लाते, एक्शन बोले तो चैंटिंग द होली नेम विद बीट, वो एक्शन हो गया। तब तक क्या है मन में, अरे हाँ भगवान से बात करते करते ये सारा काम कर रहा हूँ, उनको ही दे रहा हूँ, उनके लिए तो मैं कर रहा हूँ। भगवान सोच रहे हैं ये बड़ा मेरे को उल्लू बना रहा है, ये अच्छा है, मतलब मुझे उल्लू बना रहा है, मैं दुनिया को उल्लू बनाता हूँ, मेरा दिया हुआ ये जबरदस्त नहीं, ऐसे नहीं कर नहीं रहा है, बोल रहा है कि मेरे को टाइम नहीं है ये सब करने का, लेकिन ये जो भी कर रहा हूँ मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, चलो ये आप इसमें से कर लो एडजस्ट।
भगवान भी सोचते हैं कि बड़ा अच्छा एडजस्टमेंट Adjust है भाई, कर लो। मतलब उसको करना नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही जैसे तैसे काम चला के मेरे को बोल रहा है चलो आप इसमें एडजस्ट कर लो, अभी मेरे पास अभी 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में adjust कर लो। तो भगवान भी सोचते हैं कि यार ये सही है, ये मुझे सही मिला है भक्त भी। तो एक्चुअली क्या है, ये सारी चीजें बहुत सारी जीरो हैं, मतलब हमारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी चीजें हम जो करते हैं ना, ये सारे अलग 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 जीरो हैं, और भगवान कृष्ण एक है, वन। The one is in the front, then everything else will fall in a perfect place. आपकी सारी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब अपने आप हो जाएंगी। मुझे बडी दे दीजिए प्लीज, मैं मेरा बहुत अपना अनुभव, डेस्परेट सिचुएशन में हूँ। तो आपके बड़ी आते हैं, आप कौन बनना चाहता है? कोई भी बन जाए एज लॉन्ग एज मुझे चाहिए, शायद कंसिस्टेंट, मैं वी नीड अ बिल्कुल कंसिस्टेंट बडी हु वांट्स। नहीं, कोई भी बन जाओ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे अलग अलग, बट आई नीड सम। मैंने स्पॉन्टेनियसली सोचा बिकॉज बहुत दिनों से मेरे मन में चल रहा था, ये मोनिका क्या कर रही है, यू नो व्हाट आर यू डूइंग। तो मैं ऐसे सोचा कि मैं ये बोल के देखती हूँ, अगर डिसअपॉइंट करूँ तो प्लीज मुझे माफ कर देना, बट आई नीड अ बडी, लेट मी एटलीस्ट So आस्क यू टू who सी। is it? Whatever Toral Mataji says, we will do. हाँ, आप मुझे बाद में बता देना, बट ढूंढ लो कोई भाई। नहीं नहीं, अभी डिक्लेयर कर रहे हैं हम, ये सब अच्छा, साथ में। अभी डिक्लेयर कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा सजेशन तो यही है कि कोई भी इस ग्रुप में ये है जो इसकी मोनिका माता जी के साथ उस डिवोटी को भी फायदा होगा, तो किसी और को चूज करते, क्योंकि हम तो करते ही रहते, लेकिन कोई भी अगर किसी और को अगर लेना है, दीना माता जी भी है, फाल्गुना माता जी भी है, कुछ रेगुलर्स है, हेमा माता जी भी है, कोई भी हो सकते हैं। आई डोंट माइंड डेफिनेटली, बट अगर किसी और को आई वुड लाइक टू गिव अपॉर्चुनिटी। किसी और को करने की इच्छा है? नहीं तो मैं अपनी बडी बन जाऊंगी, चिंता न को, अरे नहीं, भगवान आपको कृष्ण को साथ लेके बैठूंगी फिर मैं। अरे नहीं नहीं, प्लीज सब आपके साथ है, आपको अकेला नहीं छोड़ते। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई विल बिकम माय ओन बडी, भगवान को बनाऊंगी। पता है क्या, मैं वो जो भी ट्यूशन फीस चलो आती है ना तोरल योगेश माता जी प्रभु, तोरल माता जी से शुरुआत करते हैं, उन्होंने बोला। आपको मैं एक बड़ी क्यूट सी चीज बताती हूँ। जो भी हाँ, फीस होती है ना, मैं जाके भगवान के सामने रख के हाथ जोड़ लेती हूँ। तो अब बच्चे पुराने हो गए, बच्चों को आदत होगी, तो अगर मैं बाद में आऊँ ना, वो आके मुस्लिम बच्चे वो तो वो मंदिर रख में देते रख होंगे के वहां हाथ जोड़ ले, पे। एंड दे टेल मी मिस हमने वहां रख दिया। That's so nice. सो That's very क्यूट good. मालूम, लेकिन इससे देखो ना कैसे बच्चों चलो का ये मन तो बढ़िया कितना, वो देखते ही ये क्या करती है, यू नो, वो एक साल में देख के समझ गए। That's so nice. वो रख के मिस आई केप्ट द फीस ओवर देयर। चलो मतलब कुछ अच्छी बात वो तो है ना, सच नाइस एक्चुअली। अब मैं क्या करूं, घर छोटा है, मंदिर यही आप लोगों ने जहाँ देखा है, तो मेरे पास कोई चारा ही नहीं था और मुझे ये करना था। It's nice ना, they also learned something nice. हाँ, तो बच्चे इतने क्यूट है, मतलब मुस्लिम बच्चे, भाई मेरे को इतनी क्यूटनेस लगी, मैं कहा वाओ, बच्चों का मन कितना साफ होता है। नहीं नहीं, वही तो, बच्चे तो हिंदू और मुस्लिम क्या, बच्चे तो बच्चे। हाँ देखो ना, आप रखते हो, बता रहे मिस मैंने मारा, फिर एक ने किया, सब करते अभी, मुझे हाथ में नहीं देते। हाथ जोड़ लेते। That's so nice, very good. You know, Krishna will always make you successful. तो मैं is a question. Sorry, Mata. Parul Mataji have. Yeah, Parul Mataji. Sorry, you wanted to say something. See your hand up. Just wanted to, when Monica Mataji was talking about what to do, as Dina Mataji said, when we joined, means myself, Dina Mataji was before me anyway. But when I came to Vasha Mataji's house and Neha Mataji was there, and Neha Mataji goes, "Oh, Parul Mataji, you can only cook only if you are doing 8 rounds or 16 rounds, and then only. So, why don't you take up some sort of that type of service? So, which will give you motivation." And you won't believe it. I jumped from 1 round. I was doing only 1 round when I came to Vasha Mataji's house. And, that's it. 1 round, that's it. And the next day, and I always loved, first thing Friday, 12 o'clock, I'm like rushing to ask Varsha Mataji, what you are cooking? What shall I cook? And then I realized, oh, I can't cook because Neha Mataji said, because you are not doing 16 rounds per Mataji. And straight away I jumped. I said, I'll do anything to do that service. And I think that's a very good motivation. It will pump you up straight away. I know we are not doing face-to-face Bhakti Viksha anymore, but but it's just it was something that I would do anything. And so I went the other way around. People do
chanting first and then do the service. For service, I done the chanting because Varsha Mataji goes, sorry, Parul, I can't let you do it because now first 2 weeks I was doing it because I didn't know, Varsha Mataji didn't know. But then suddenly Neha Mataji must have said something. And Varsha Mataji goes, sorry, Parul, you can't cook today because you are not doing 16 rounds. And I'm like, oh God. And that's it. I said, okay, if I do 16 rounds, can you let me cook? And she said, yes, then you can cook. So I'd straight away gone that way. So I think if you take up something like challenge yourself, that I want to do this, and that's, I can do that only if I do 16 rounds, then you will straight away jump from 1 round to 16. That's all I wanted to say. Yeah. Amazing, amazing. So did you jump from 1 to 16 directly? Yeah, straight from 1 to 8 first. And then one day, I think you were there as well. And then you said, can you try next week 2 more, Mataji? And then I said, I done, then next Friday, I done 11. And then you said, oh, 11 is not that far from 16. You can definitely do, I know when Yogesh Prabhu motivates somebody, Yogesh Prabhu motivates properly. He can push you to the limits. And Yogesh Prabhu said, yes, you can do it, Parul Mataji. Next week, I want you to come back and tell me that you have done 16. And yes, I did. So yeah, I done within one month, I was from 1 to 16. First 1 to 8, and then 8 to 11, and then 11 to 16. Yes. But yeah, it can be done. It's just that, you have to challenge yourself and to take up some service which will allow you to do it only if you do the rounds. So, make up something in your mind, like, I can do only if I do 16 rounds, then only I can do that, Yeah. Wow. That's so inspiring. Amazing. Yeah. Thank you, Mataji. Thank you. Hare Krishna. Really nice, really nice. So this is what we are talking about, What a great conviction. Enthusiasm of What a great enthusiasm. So nice. Very, very inspiring. बहुत बढ़िया. Yeah, actually, I mean, what Mata just said is the same thing. Actually. You can do. करके मैं अपनी बड़ी बनके करके देखती हूँ. अपने आप कैसे Yeah, करके actually, देखूँ. her point is also very good, that what she said is about the service. To take up some service, and because of that service, we kind of, 8 rounds की कौन सी service permissible? I don't want to have over ambitious targets, Prabhuji, and then stumble again. Let me be honest, तो अभी कितने कर रहे हैं आप? अभी 4 6 4 6 4 6 ऐसे हो जाता है. तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा. 4 to 8 में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस. मतलब अभी आप मान लो 4 to 6 कर रहे हो, उसके बाद में आप 8 पे जा रहे हो, तो इट्स नॉट अ बिग एक्चुअली डिफरेंस. नहीं, बस उसको कंसिस्टेंटली करना. 8 तो कर ही लेती हूँ, तो दैट्स वो मैं कह रही हूँ. उस टारगेट को पहले उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँ, फिर मैं 10 पे जाऊँ कि 10 कंसिस्टेंटली. Yeah. Actually, what happens is, on the special days, you make a special prayer and you start. Empowerment does not come by ourselves. Empowerment comes from Krishna. तो आप रामनवमी के दिन, on the day of Ramnavami, you are coming for Mangalarti, na? So then what you can do, क्योंकि मंगलारती में जितने लोग आ रहे हैं ना, वो सब 16 राउंड पक्का करना है उनको, क्योंकि वो तो वहां chanting 16 हो ही जाएगा. वहां तो ऐसे जो जाती हो तब हो जाता है, तब तो आराम से हो जाता है. तभी तो मैं कह रहा हूँ वो शुरुआत होगी. तो एक्चुअली क्या होगा, उस दिन आप जब आओगे रामनवमी के दिन, तो you are chanting in the association of devotees. You are taking the place of Radha Gokulanand, Sitaram, Lakshman, Hanuman ji, Gaur Nitai Prabhupada. So you are actually in their own presence. You are starting something amazing. मतलब आप भगवान के साथ में हो. भगवान के साथ में हो कि कोई चीज आप शुरू करो और वो रुक जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो गया. तो उस दिन आपका 16 चालू हो जाएगा. आप 21 दिन करके देखो. रामनवमी के दिन से 21 दिन करके देखो. अगर मैं आपको अभी बोलता हूँ कि अगर आपको 21 दिन के बाद में लगता है कि आप 16 नहीं 8 करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, गो बैक टू इट. दैट्स ओके. Let's do this. ओके. तो आप 21 दिन करके देखो. एक्चुअली निहार प्रभु एक हैं जो कि गुडमेज, उनमें निताय प्रभु के, मेरी उनसे यही बात हुई, तो उनको भी ऐसे चैंटिंग में था. बोले कि 21 दिन, बोले 21 दिन के बाद में वो कंटिन्यू कर दिया. लेकिन बट ही लाइक्ड इट, नॉट सेइंग दैट ही लाइक्ड इट. ऑफ कोर्स, उसमें तो कोई डिनाई नहीं है. अंदर से ही जैसे
it's some sort of, strength that you have, some sort of calmness that you have, जितने So ज्यादा that's easy. chanting में. So basically, how it is going to happen. रामनवमी 10 अप्रैल की है, ओके. आप 10 अप्रैल से भले 21 दिन करो या तो नरसिंह चतुर्दशी तक करके देखो. नरसिंह चतुर्दशी है शायद 14 मई है, समथिंग. 1 महीना हो गया मान लो. मतलब पूरा 1 महीना है. तो आप ये पूरा महीना भगवान राम के आशीर्वाद से नरसिंह देव के आशीर्वाद तक करके देखो. हाँ तब तक करके देखो. अगर आपको कोई इश्यू हो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन गो टू 8 राउंड्स. लेकिन हम पहले से ही मतलब व्हाई आर वी एमिंग लो. सही बात है. क्यों एम लो करें, एम तो बड़ा रखें. हाँ मतलब अब जब चांद का वो निशाना लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कहीं से तारे तो मिलेंगे. तारे तो मिलेंगे. Absolutely. नहीं, this sounds like an idea. हाँ, This तो आप sounds like ऐसा करके रखिए. आपको कोई लाइफ टाइम का कोई कमिटमेंट हम नहीं दे रहे हैं. आप थोड़ा नहीं, मुझे खुद चाहिए ये. कोई मुझे क्या देगा? I need it. I'm like a beggar to myself. देखिए, फिर वो आपका अपना बनेगा ना. आपको हम हाँ. फिर नहीं बोलेंगे, वो आपका अपना होगा. इसीलिए तो मैंने बोला ना कि जो डिसीजन आपका अपना होता है ना, वो लंबा चलता है. सही जो बात डिसीजन कोई आपको किसी भी Impose तरीके से करके. कन्विंस करके फोर्स करके कैसे भी करवाता है ना, वो लंबा नहीं चलता है. सही बात है. इसलिए मैं 1 महीने का ही कह रहा हूँ खाली, क्योंकि हमारा जो है वो 1 महीने चलेगा. उसके बाद में हमारा नहीं चलेगा, उसके बाद में आपका चलेगा. चलेगा. हाँ. नहीं, आप सही कह रहे हैं. हमारी दौड़ तो वही तक है, उसके बाद में तो हम थक जाएंगे. उसके बाद में आपको आगे भागना है, आप भागेंगे आगे. और योगेश प्रभु, जैसे 4 राउंड के बाद ना कंसंट्रेशन लैक होने लगती है. 4 राउंड के बाद में एक्चुअली अगर आप डिवोटीज के साथ में कर रहे हैं और अगर आप साउंड वाइब्रेशन को अच्छे से सुन रहे हैं, तो आपकी 4 राउंड के बाद में कंसंट्रेशन बढ़ती है. एक्चुअली बनेगी. उसका उल्टा होता है. एक्चुअली क्या होता है, 4 राउंड तक आप धीरे-धीरे बिल्डअप करते हो. नहीं, शायद 6-8 राउंड. टू बी ऑनेस्ट, मैं 4 जल्दी बोल रही हूँ. फाउंडेशन में थोड़ा टाइम लगता है. जैसे एक बार फाउंडेशन क्लियर हो गई ना, फिर यू आर एक्चुअली इन द बिजनेस. मतलब आप उसके अंदर हो, फिर उसमें तर हो जाते हैं. फिर यू आर एक्चुअली एनग्रोस्ड. फिर आपको कुछ नहीं, बाहर की चीजें आपको मतलब अट्रैक्ट नहीं कर सकती या डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती. मतलब ये जब जपा मैराथन में हम लोग करते हैं ना, तो बहुत सारी बार मैंने अनुभव किया है. मतलब शुरू के राउंड में माइंड थोड़ा सा इधर उधर होता है, लेकिन जैसे एक बार सेट हो गए ना, फिर तो टाइम नहीं लगता, आपको छोड़ने का मन नहीं करता है. मन नहीं करता. ये सही कह रहे हो आप. छोड़ देखा नहीं मेरे को सकते. कितना टाइम हो गया इन सब चीजों को करते हुए. फीलिंग्स ही भूल गई हूँ. सही वही, कह रहे हैं आप. मतलब एक कि बार जब रख तक जाओ. कोई बहुत बड़ा काम बीच में नहीं आ जाए ना, हाँ. तब तक छोड़ने का मन ही नहीं करता. वो मन चलता ही नहीं रहता है, करता. चलता ही रहता है. हम सोचते हैं कि रात के कई बार मतलब कोई प्रोग्राम करके आए और अगर जपा मैराथन का दिन आए तो फिर से चैंटिंग बीट लेके चालू हो गए. हाँ, रात और के 12 काउंटिंग बजे भूल तक चालू. जाते हैं. फिर उसके बाद फिर काउंटिंग का भी ध्यान नहीं रहता. नहीं, चलते जा रहे, राउंड वो होते जा जो रहे. वो क्या साक्षी बीट रहता है, विटनेस, तो वो नीचे आता रहता है. बट लेकिन हमारा मेन फोकस है कि चैंटिंग करते रहो, क्योंकि उसका एक रस बन गया. इट्स अ वेरी नेक्टेरियन थिंग. बड़ा अमृत जैसा लगता है. माताजी, shall I say something? हाँ. ये जो भी छोटे जो भी हमारी ये सर्विसेज और जो फंक्शंस होते हैं ना, उससे ड्रिफ्ट अवे मत हो जाओ. आप साथ में नहीं होना चाहती. नहीं होना चाहती. आप नहीं मत जानते हो, मैं बार मैसेज देखती हूँ. 100 बार देखती रहती हूँ. मौका ढूंढती रहती हूँ. थोड़ा फंस गई हूँ मैं अभी. हाँ, वो अवंती स्कूल में जब था, मॉर्निंग की मंगला आरती थी, सब हम लोग वहां गए थे, तो वहां उषा माता जी ने यही कहा था कि उनको भी ऐसे ही वो आए थे. वो कैसे मैं उठूंगी दिस करते करके यमुनेश्वरी माता जी और योगेश प्रभु उन पे थोड़ी जवाबदारी देते गए. और फिर ओ मुझे कुकिंग करना है, मुझे शौक तो है प्रसाद. हाँ, वो भी कुकिंग की वजह से आए थे. वो कुकिंग की वजह से आए, क्योंकि कुकिंग करने के लिए उनको चांट करना ही पड़ेगा. और फिर बाद में ये इतना सारा एडवांस हो गए वो अपने कुकिंग की शौक के लिए. शौक से. हाँ, जो सर्विस करना चाहते, जो मन से करो, उसमें मोटिवेट्स यू. हाँ, पारुल माता जी की बात सही है. कोई ऐसी डिवोशनल सर्विस पकड़ लो जिसमें आपको 8 या कुछ 12 या 16 तो करना ही होगा, तब भी आप कर सकोगे. I don't know, this is out of एक्चुअली जैसे ही आप 16 करना चालू करोगे ना, आपको हम राधा लंडनीश्वर की कुकिंग का सर्विस का मौका देंगे. करके तो देखो. नहीं, हो गया ना, बात करके हो गया ना. रामनवमी टू नरसिंह चतुर्थी. अरे वो सॉरी तोरल माता जी, आई इंटरप्टेड यू. कैरी ऑन. ओके प्रभु जी. एक सर्व सामान्य नियम है माता जी कि कभी कभार कुछ ज्यादा पाने के लिए थोड़ा हमें मुश्किलें सहन करनी पड़ती है.
I was just giving example out of our topic है, लेकिन I don't know if you have seen that film 172 hours. आप किसी ने देखी है? मैंने देखी होगी, नाम नहीं मालूम होगा. माता जी, That's वो me. इंसान जो था वो 172 आवर्स 2 रॉक्स के बीच में फंस गया. 172, ये ट्रू स्टोरी है. उसने 172 आवर्स कैसे निकाले भूखे प्यासे. अगर आप देखोगे तो आपको भगवान को जिसको जिंदा रखना होता है वो फिर भी रखते हैं, लेकिन एट द एंड उसको पता चला कि अभी मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा इस दलदल में से, तो फिर मैं कभी नहीं जिंदा नहीं जाऊंगा. तो उसने अपने हाथ से जिगर करके अपने ही हाथ को काटा. कैसे काटे सब दिखा